बेटा हमने ब्लड के बारे में लास्ट टाइम वी हैड डन इट, एंड देन lymph. So first you should know that lymph, पहले ध्यान से समझना है, lymph is the part of blood and it ultimately becomes part of the blood. It is formed by filtration of blood and later it mixes with blood. ये पता होना चाहिए. lymph क्या है बेटा कि यहाँ पे देखो ये हमारे सेल्स है, दिस इज द टिश्यू, ठीक है. टिश्यू के अंदर एक आर्टरी आकर उसमें बहुत छोटी छोटी, बहुत नैरो इस तरह से बहुत नैरो ब्लड कैपिलरीज बना दी. ब्लड कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड, ठीक है, वेरी थिन वॉल्ड, वेरी नैरो. देयरफॉर water soluble substances and some cells, some blood cells, they filter out from the blood capillaries into the tissue spaces या spaces, intracellular spaces between cells. सेल्स के बीच में, डिफरेंट सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहां पे ये फ्लूइड आ जाता है. एंड दिस इज, यहाँ पे टिश्यू में दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, या हम इसको और क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड. दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड. आप ये देखो कि ये हमारा एक टिश्यू है, लेटर से, राइट. एंड देन दिस टिश्यू फ्लूइड तो रेगुलर बन रहा है क्योंकि ब्लड रेगुलर आ रहा है, और ब्लड कैपिलरीज सारी यहां से फ्यूज होकर यहाँ पे दिस इज वेन, वेन से बाहर जा रही है. जैसे ये वेन जा रही है ऐसे ही यहाँ पर टिश्यू के बाहर स्मॉल these are lymphatic capillaries arise. This tissue fluid, it flows out into the lymphatic capillaries, and this fluid in these capillaries, these it is now called as lymph. है तो lymph, interstitial fluid या tissue fluid एक ही चीज है, बट जब ये fluid in between cells है तो इसको कह देते हैं, lymph भी कह सकते हैं, but mainly it is tissue fluid या interstitial fluid. When it flows into the lymphatic vessel, it is called as lymph. ये जो है lymph capillaries है, lymph capillaries ज्वाइन करके lymph vessels बना देंगी. It is a lymph vessel. और बहुत सारी lymph vessels, this is lymph vessel, this is lymph vessel, this is lymph vessel, बहुत सारी lymph vessels मिलकर क्या बनाएंगी, this is lymphatic duct. और ये जो lymphatic duct है, it pours blood, it pours lymph in vena cava. Vena cava is a large vein, blood vessel है, ठीक है.
तो अब बेटा कि ये हमने बताया दीज आर ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में से क्या कुछ फिल्टर होता है? देखो जरा, ब्लड कैपिलरीज में से क्या कुछ यहाँ पर फिल्टर होगा? ये है वाटर, प्लाज्मा में जो वाटर है, वाटर सोलुबल substances such as minerals, small proteins, ठीक है, and few WBCs। few WBCs ब्रैकेट में लिख लो, मेनली लिम्फोसाइट जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, मेनली लिम्फोसाइट्स। टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ, नो RBCs and blood platelets। No large proteins। फंक्शन क्या है इसका, टिश्यू फ्लूइड का, लिम्फ का? तो बेटा सबसे पहले तो है, क्योंकि ये सेल्स को, सेल्स के बीच में है फ्लूइड है, इट कीप्स द सेल्स मोइस्ट। सबसे पहले तो उन्हें सूखने नहीं देते हैं, वो उनको मोइस्ट रखते हैं। दूसरी बात, ये एक मिडल मैन की तरह काम करेगा, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट एक्ट्स एज ए मिडल मैन। जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो पहले कहाँ पे आई? टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से फिर सेल से, सेल से CO2 पहले टिश्यू फ्लूइड में और फिर ब्लड। इस तरह से द सब्सटेंसेस फर्स्ट डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड देन इनटू द सेल्स, or from cells waste materials diffuses from cells into tissue fluid and then into blood. Therefore we can say tissue fluid या interstitial fluid acts as a middleman, right? Then third है, ब्लड का बहुत सारा पानी जो है फिल्टर होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ में आ जाता है। इसका क्या फायदा, क्यों वाटर यहाँ पे डिफ्यूज हो गया, या इसका फायदा क्या हुआ अगर डिफ्यूज हो गया? अगर ये ब्लड में ही रहता तो ये जो वेन के थ्रू ब्लड बाहर आता उसमें भी पानी बहुत होता, और वो ब्लड जो है किडनीज के थ्रू, सॉरी वो वाटर जो है वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता। तो अगर लिम्फ नहीं बनेगा तो बहुत सारा पानी जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा किडनीज में, और बॉडी में क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ या you can say tissue fluid, it helps in preventing excretion of water. And last is the lymph helps in transport of या absorption of या transport of lymph soluble digestive fats. Lacteals मैंने आपको बताया था, lacteals helps in transport of digestive fats from intestine into rest of the body, ठीक है। So these are the functions of lymph, ठीक है जी, समझ में आई है मेरी बात? ठीक है, तो लिख लो लिम्फ क्या है। As the blood flows, as the arteries, blood मत करो, as the arteries enters into the tissue, as the arteries enters into the tissue, they divide into many narrow, they divide into many narrow, thin-walled, highly permeable blood vessels, highly permeable blood vessels called as blood capillaries, called as blood capillaries,
सेकंड पॉइंट आ जाइए, बिकॉज दे आर, बिकॉज ब्लड कैपिलरीज आर, बिकॉज blood capillaries are thin-walled and permeable. Therefore, water and water-soluble substances. Therefore, some water and water-soluble substances diffuses out in the intracellular spaces of the tissue. In the intracellular spaces of the tissue. This fluid, next point करके लिखना, this fluid released out from the blood is called as tissue fluid or interstitial fluid. Tissue fluid or interstitial fluid. It consists of, tissue fluid consists of, next point करके, tissue fluid consists of water soluble substances, ये लिख लो, water soluble substances such as minerals, small proteins, and few WBCs, bracket में लिख लो, mainly lymphocytes. Few WBCs and these are mainly lymphocytes. Next point आ जाइए. It lacks large proteins. It lacks large proteins and most of the preformed elements. Most of the preformed components of the blood. Preformed components means blood corpuscles. Preformed components of the blood such as RBCs and platelets. Such as RBCs, platelets and most of WBCs. क्योंकि सिर्फ lymphocytes ही तो है. And most of WBCs. Next point आ जाइए. The tissue fluid flows out from the tissue into lymph capillaries, which fuse to form lymph vessels, comma करके, various lymph vessels of the body further fuse to form lymphatic ducts, and full stop करके लिखो,
Finally, the lymphatic ducts opens in the vena cava. Finally, the lymphatic ducts opens into vena cava. The tissue fluid into the lymphatic system. The tissue fluid, yeah, the simple fluid लिख लो. The fluid which flows into the lymphatic system is called as lymph. Is called as lymph. Next point है lymphatic system is formed by lymph capillaries, lymph vessels, and lymphatic ducts. Lymphatic system is formed by lymph capillaries, lymph vessels, lymphatic ducts, along with lymph. Lymph is colorless. Due to absence of RBCs. Lymph is colorless due to absence of RBCs. Next आ जाइए functions of lymph. Functions of lymph. So first है keeps the cells moist. Keeps the cells moist. Prevents excretion of much water to kidneys. Third है has lymphocytes. Thus provide immunity. And fourth is transport of digested fats and fat soluble vitamins. Transport of digested fats and fat soluble vitamins. The lymph capillary through यहाँ पे लिख लो through lymph capillaries of intestine, through lymph या via lymph capillaries of intestine called as leptin. ये अब digestive system में किया है via leptin. Is it okay? हम ये point repeat करना via lymph capillary. Via lymph capillaries of intestine called as leptin. ठीक है एक ये रफ सा डायग्राम थोड़ा सा बना लो फटाफट से. ठीक है तो याद रखना है बेटा कि टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ एक ही चीज है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा
circulatory pathways. सर्कुलेटरी पाथवेज. अब देखो बेटा, ये हार्ट है. हार्ट आपको पता है पंपिंग ऑर्गन है. इट पंप्स ब्लड. पहले ध्यान से सुनना है, लिखने में बाद में. इसने ब्लड को पंप किया, कहां पे भेजा? लार्ज ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल, ये टिश्यू है. ये टिश्यू है. ये लार्ज ब्लड वेसल आई और इसने ब्लड जो है अंदर लिबरेट कर दी. नो कैपिलरीज. और ब्लड सारा यहाँ पे फैल गया और वो फ्लो करी जा रहा है और अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हुए और फाइनली यहां से एक वेन निकली, लार्ज वेन निकली एंड पंप्स ब्लड या passes blood into the heart. This is large vein. So what is the ultimate conclusion? That capillaries are absent. Blood flows in the open spaces in the tissue. No capillaries are there. So this is called as, इसको हम क्या बोलते हैं? Open circulatory system. This is large artery. This is large vein and there are no capillaries. Blood flows in open spaces in tissues called as sinuses. जो टिश्यूज में ओपन स्पेसेस है उनको हम कह देते हैं साइनसेस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा कहाँ पे मिलेगा? इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स. आपने 9th में किया होगा आर्थ्रोपोड, जिसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, स्पाइडर्स आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं. So arthropods. Another is mollusks, shelled organisms, सीपियां, शंख, ऑक्टोपस, ये सब आ जाते हैं मोलस्क से. तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. दूसरा आ जाता है बेटा, एक और हम बात करते हैं, हार्ट. हार्ट से पंप हुआ आर्टरीज. आर्टरीज ये टिश्यू है, जैसे हमने लिम्फ वाले केस में बताया था. ये टिश्यू में सेल्स है. Here the artery enters in a tissue and divides to form many blood vessels called as capillaries. Capillaries finally fuse to form, this is vein, and vein किसी तरह से जो है फिर हार्ट तक पहुंच जाता. So this is artery. Capillaries और फिर vein. This circulatory system
is called as closed circulatory system. This is called as closed circulatory system. ठीक है? And it is present in, example क्या है? It is present in annelids, earthworm जिसमें आता है, and chordates, fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals, इन सब में closed circulatory system. ठीक है? तो पहले ये लिखो. Circulatory pathways are of two types. Circulatory pathways are of two types. First है open circulatory system. Open circulatory system. In this system, the blood is pumped by heart in the large blood vessels. Which pours blood in the tissue spaces and in the spaces between tissues. In the tissue spaces मतलब intracellular spaces. यहाँ पे लिख लो large blood vessels pours blood in between various tissues and in between various cells. The small blood vessels and the capillaries are absent. जो थोड़ी arteries है, छोटी arteries है, capillaries है, they are absent. मैम एक बार रिपीट करना ये वाले पॉइंट को. The small blood vessels and capillaries are absent. The open spaces in the body. The open spaces in the body where the blood flows are called as sinuses. SINUSES, sinuses. Next point है, as the flow of blood is non-directional. As the flow of blood is non-directional. कोई ऐसी particular direction नहीं है. Therefore, open circulatory system is less efficient. Therefore, open circulatory system is less efficient. Next point है, it is present in arthropods and mollusks. It is present in arthropods and mollusks. Next आ जाता है closed circulatory system. In this, the heart pumps blood in large arteries,
which divides to form many small arteries, which divides to form many small arteries. Full stop. These small arteries enters in the tissues. These small arteries enters in the tissues and divide into many thin-walled narrow capillaries. Many narrow thin-walled capillaries. Capillaries on coming out of the tissue, capillaries on coming out of the tissue join to form small veins, join to form small veins, which further fuse to form large veins, which further fuse to form large veins that opens in the heart, that opens in the heart. Next point है, in closed circulatory system there is directional blood flow. There is directional blood flow. यहाँ पे तो थोड़ा सा बिखर जाता है ब्लड, वहां पे बिखरता नहीं है, वहां कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है. Directional blood flow and thus is more efficient. And thus is more efficient. Example है annelids and chordates. Example is annelids and chordates. ठीक है, ये बना लो थोड़ा सा. ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लार्ज आर्टरी है, ये टिश्यू में भी छोड़ रही है, ये बिटवीन टिश्यूज जो है वहां भी, दिस इज ऑल्सो ए टिश्यू. So this is a sinus, open spaces in between tissue. यहाँ से ब्लड फिर अंदर जाता है. ठीक है, करो बना लो, थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना लो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सर्कुलेटरी पाथवेज में भी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन. सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन. अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये देखिए, ये हार्ट है बेटा, इसको आप थोड़ा सा ये है पाइसियन हार्ट, फिशेस का हार्ट है. यहां से ब्लड अंदर आया. दिस इज एन एडिशनल चैम्बर, साइनस विनोसस. टू मेन चैम्बर्स है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल. दिस इज एसेसरी चैम्बर
sinus venosus. Accessory chamber of हार्ट। ठीक है, तो ब्लड जो है यहां से साइनस विनोसस में आया, यहां से राइट एट्रिया में गया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गया। ये जो ब्लड वेसल है दिस इज कॉल्ड एज एओटा। एओटा में गया, एओटा से बेटा you know this is यहाँ पे गिल्स है, दिस इज गिल्स। और ये हमने शुरू में भी किया था, दोबारा से मैं बता रही हूँ, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया, बॉडी में गया, और बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब रेस्ट ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से इधर गया। ठीक है जी, तो दिस इज वीना कावा, दिस इज डॉर्सल एओटा। वो वेंट्रल एओटा था, ये है डॉर्सल एओटा, और इस तरह से ब्लड गया। दिस इज कॉल्ड एज, बिकॉज ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन लाइफ साइकिल, सॉरी वंस इन वन सर्कुलेशन। Blood flows through heart only once in one circulation. Therefore, it is called as single circulation. पहली बात। दूसरी चीज, only deoxygenated blood flows through it. ये कौन सा ब्लड है, deoxygenated ब्लड। ये हार्ट में गया, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे सिर्फ जो गिल्स में से आया वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में गया। ठीक है, तो बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट, देयरफॉर हम हार्ट को क्या बोलते हैं, देयर इज वीनस हार्ट। ठीक है, पहले लिखो, इन फिशेस दिस इज पाइसियन हार्ट, PISCEAN, पाइसियन हार्ट and circulation. So first note down, Piscean heart is two-chambered. Piscean heart two-chambered. इसमें राइट भी नहीं लिखेंगे, वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। There is an accessory chamber called as sinus. हाँ जी बेटा, Ma'am, repeat. there are two chambers. Piscean heart is two-chambered. That is has one atria and one ventricle. Next point लिखिए, there is an accessory chamber called as sinus venosus. There is present an accessory chamber called as sinus venosus. नेक्स्ट है फ्लो ऑफ ब्लड, आप लिख सकते हैं
लिख सकते हैं खुद के नहीं? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, sinus venosus, then atria, then ventricle, then ventral aorta, gills, oxygenation, then body, and then again deoxygenate. लिख सकते हैं सर्कुलेशन के नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबडी है ना, ये आपको दिख ही रहा है। तो मैं यहाँ सिंपल लिखवाऊंगी कि as in fishes, the blood flows through heart only once. As in fishes, the blood flows through heart only once in one circulation. Therefore, it is called as single circulation. It is called as single circulation. Next point आ जाइए further, only deoxygenated blood flows through heart. Only deoxygenated blood flows through heart. Therefore, it is called as venous heart. It is called as venous heart. ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड आ जाइए, एम्फीबियन हार्ट। Next is amphibian heart. अब यहाँ पे देखिए बेटा, थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते ताकि आपको और क्लियर हो। दिस वन इज, ये जो है, these are vena cava which opens into sinus venosus. Then this is right atria, this is ventricle, left atria, and this is truncus arteriosus. ठीक है, यहां से बेटा इधर से ब्लड आया, बॉडी से ब्लड कहां पे आया? साइनस विनोसस में। साइनस विनोसस से आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स में से आया लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से आया फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से गया ट्रंकस आर्टेरियोसस में, और ट्रंकस आर्टेरियोसस से बाकी की बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पहले तो समझो कि एम्फीबियन हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 atria, 1 ventricle, 2 additional chambers,
कौन से हैं? साइनस विनोसस, ट्रंकस आर्टीरियोसस। आप पूरा लिखना तभी याद रहेगा, पता चलेगा। साइनस विनोसस, ट्रंकस आर्टीरियोसस। बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये गया साइनस विनोसस में, राइट एट्रिया में, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गया लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हुई, CO2 रिमूव हुई, लंग्स में से आया लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में, देन ट्रंकस आर्टीरियोसस में, और फिर बॉडी में। तो यहां पे वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड गया इधर? मिक्स्ड ब्लड। लंग्स में से कौन सा ब्लड आया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्स हो गए, क्योंकि कोई सेपरेट चैम्बर्स तो है नहीं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, कुछ मिक्सिंग हुई। अगर हम देखें कि यहाँ पे वेंट्रिकल से ब्लड बाहर गया और फिर हार्ट में आ गया, फिर ये गया बॉडी में, ठीक है? तो पहले बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बाहर, फिर हार्ट से, फिर बाहर से अंदर, और फिर बॉडी में। तो ब्लड इज फ्लोइंग ट्वाइस थ्रू हार्ट। तो यहाँ पे लिखो, इन एम्फीबियंस, in amphibians blood is flowing twice through heart, in one circulation. फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, as in amphibians there is single ventricle. As in amphibians there is single ventricle which pumps out mixed blood, which pumps out mixed blood. Therefore the circulation is called as partial double circulation या incomplete double circulation. Therefore double circulation is called as partial या incomplete double circulation. नेक्स्ट पॉइंट है, राइट एट्रिया रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट एट्रिया रिसीव्स deoxygenated blood from body, and left atria receives oxygenated blood from lungs या skin या gills. लंग्स या स्किन या गिल्स. राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. 10 कॉमा करके 10. हार्ट इज कॉल्ड एज आर्टीरियोवीनस हार्ट. आर्टीरियो मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीनस मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हार्ट में दोनों टाइप के ब्लड है. तो
It is arteriovenous heart. नेक्स्ट आ जाता है बेटा रेप्टिलियन हार्ट. Partially divided four-chambered heart. Partially four-chambered heart. This one, ये देखिए, this is reptilian heart. ये है sinus venosus, right atria. This is partially divided ventricle. Partially divided ventricle. ये जो है, this is pulmonary arc. यहाँ पे lungs है, lungs से blood ये गया लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड, प्योर तो नहीं है, अगेन मिक्स्ड ब्लड, पार्शली डिवाइडेड है, ये गया बॉडी. दोबारा से बॉडी से आया साइनस विनोसस में, इधर से राइट एट्रिया में, यहाँ से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क में, पल्मोनरी आर्क से लंग्स में, और लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में, देन वेंट्रिकल में. Some mixing occurs here and mixed blood is supplied to the body. So this is reptilian heart. So reptilian heart बना पहले लिख लो. It is partially divided four-chambered heart या partially divided three-chambered heart भी हम कह सकते हैं, कुछ भी कह लो. Partially divided four-chambered या partially divided three-chambered heart है sinus venosus, two atria and partially divided ventricle, and partially divided ventricle, except crocodiles, which have complete four-chambered heart, नेक्स्ट है सर्कुलेशन. अगर हम कहें या ब्लड इज आर्टेरियोवेनस, नेक्स्ट सॉरी हार्ट इज आर्टेरियोवेनस आर्ट,
Heart is arteriovenous as it receives both oxygenated and deoxygenated blood. ठीक है, उसके बाद लंग से फिर वेंट्रिकल, सॉरी आई एम सॉरी, लेफ्ट एट्रिया, देन वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से फिर बॉडी. Again, blood passes through heart twice. Blood passes through heart twice in single circulation. In single circulation. But ventricle is passing out mixed blood. But ventricle is passing out mixed blood. Therefore, reptiles also show incomplete double circulation. Reptiles also show incomplete double circulation. और लास्ट आ जाता है, ये हम डायग्राम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे डिटेल में, बट आप लिख लो बर्ड्स एंड मैमल्स. बर्ड्स एंड मैमल्स. मैम इस हार्ट का नाम क्या था? बेटा आर्टीरियोवीनस हार्ट. ये भी नहीं मैम, जैसे एम्फीबियन हार्ट था, ये रेप्टिलियन हार्ट. रेप्टिलियन हार्ट रेप्टाइल्स का हार्ट है. रेप्टिलियन हार्ट. नेक्स्ट है मैमल्स एंड बर्ड्स प्लस crocodiles have completely divided four-chambered heart. Completely divided four-chambered heart. Comma. The ventricle pumps, the left ventricle pumps only oxygenated blood to the body. The left ventricle pumps only oxygenated blood to the body. Thus, in birds and mammals, there is complete double circulation. Heart तो arteriovenous है ही है. There is complete double circulation and heart is arteriovenous heart. तो बेटा completely four chambered heart किसका होता है? Avian heart, avian and mammalian heart. जो अभी हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? Avian and mammalian heart. मैम and their heart is arteriovenous. तो कौन सा हार्ट है? एवियन एंड मेमेलियन हार्ट. एक बार बना ही ले, थोड़ा सा जरा सा है लास्ट डायग्राम, ये भी बना ले, फिर डिटेल्ड मैमल्स का हार्ट बनाएंगे.
दूसरे कैंसिल करना। ठीक है जी, ये देखिए ब्लड यहाँ से आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये है पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्टरी, ये भी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से लंग्स में, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया aorta. This is completely divided 4 chambered heart. देखो जरा, so this is avian and mammalian heart. ठीक है बेटा, तो आज हमने किया ओपन सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी पाथवेज हमने किया। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे दैट इज अबाउट मेमेलियन हार्ट, उसकी डिटेलिंग करेंगे। ओके बेटा, बना लो ये जल्दी से। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।